Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis for Nifty and Bank Nifty. And first, we will discuss about Bank Nifty. The market is still on at 3:27 p.m. So, starting with Bank Nifty today. First, we will go on the weekly time frame. So on the weekly time frame, it is yet to break this particular week's high, the previous week's high, which is around 51,750. Only once it takes high of this particular level, then we will go aggressively long. And today it did trap, and I will explain that when I come on the 15-minute time frame. So yes, there is this M pattern, but it's an old one now. So what I will try to do, this is a trend line that we are watching out in Bank Nifty, and look at this particular zone. This was basically a support, then there was this breakdown of this particular support, then it acted as a resistance, and again it came, and again it is acting as a resistance. And I am expecting at least market to like stay here and then break out. Only once this particular zone is cleared, then we can at least expect its previous ATH, at least that much. Let's see how it goes. So coming to the 15-minute time frame, I'll show you where it trapped today. So this was the line that we were looking out, right? Yesterday's high and everything. And then Bank Nifty does this kind of a pattern, and it's a perfect pole and a flag pattern in 5 minutes. If you go and check this out, there was a perfect pole and flag pattern in 5 minutes, and then there was a breakout also. But then it immediately, the breakout got failed immediately. The very next candle like rejected the breakout candle, and then from there was some sharp volatility. It came again, and this was the time when both call and put spiked like anything. And as I said, the market is still on, and this is the adjusted closing. As you can see, again the closing is above 51,100. We wanted it to be around 51,000, and it ended up having like 51,100. So it did take support somewhere around this zones of I guess Tuesday lows, and then it came back into the zone. Now for tomorrow, first of all, let's understand, like tonight we have this inflation data. I guess Indian time it will be somewhere around at 6 p.m. So that data is very important. So basis that the next momentum for Bank Nifty and Nifty will be determined, as well as for Dow Jones, of course. So for now, what I can clearly see, that there is a rectangle pattern in place. So अभी हमें यहाँ पर ये clearly दिख रहा है कि there is one rectangle, और ये rectangle में आपको दिख रहा होगा ये काफी बार ये tested है, मतलब lows भी tested है ये particular supports, and this has been also been tested, the resistance. So now the best part is कि ये हमें like we are getting the closing of 51,000 since many days now, apart from this particular day which was a Friday. उसके अलावा we are getting this 51 के ऊपर के closing every single day. So now for tomorrow, since there is a data, I am not expecting market to open flat. It would be either with the gap up or a gap down. So the trade plan for tomorrow is, let's assume if it opens with a gap up somewhere in the zone of 51,300 to 51,200, let's say it opens within this particular zone, then market will first try to come down and fill up this particular gap, and then try to reverse. And the moment when it breaks the current day's high, which will be the tomorrow's day high, that's when we can go long, because these levels have been tested now, and this will have very less importance as a resistance, as this level has been tested several times. So now the next time it will try to attempt this particular level, it will definitely break this level, and we can at least expect 51,800 zones. At least that's the first target, although I'm expecting bigger targets once this particular zone has been taken out and we get a good closing above 51,750. That's when we will talk about the fresh targets. But for that to happen, we need this level to be taken out precisely. Okay. The second thing, let's assume we are opening with a very, very mega gap up. In that case, our same logic of 30-minute waiting, which would be 2 15-minute candles, we will wait, and we will mark the high and the low of the first 2 15-minute candles, and thereafter wherever the market goes, we will try to trade from that particular direction. That is for a mega gap up in case of Bank Nifty. That's not like 51,200, like not 100-200 point gap up I'm talking about. That's I'm expecting, like let's say if there is a mega gap up or a mega gap down, then we will wait for the first 2 15-minute candles, which is first 30 minutes, and then we will decide the trend. So ये बहुत क्लियर है. अगर बहुत बड़े गैप अप से खुलते हैं, जो कि मैं 100-200 पॉइंट की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़े गैप अप से खुल रहा है, तो हम फर्स्ट 2 15-minute कैंडल्स के लिए वेट करेंगे, उसके हाई या लो को मार्क करेंगे, और वो जिस भी तरफ निकलेगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे. और बाकी तो लेवल्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, वही रखेंगे हम, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है. इसको खाली हम एडजस्ट कर देंगे, और ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट हो जाता है. बाकी वही के वही रह जाएंगे, और ये अभी रेक्टेंगल में बन चुका है. नाउ लेट्स डिस्कस ऑन निफ्टी, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है. तो निफ्टी में अगर डेली देखो तो कल जैसे पूरी बार थी उसके अंदर की वाली है, ये इनसाइड बार ही है मोर और लेस. बट हाँ, ये है थोड़ा सा अंडर कट करके वापस आई है रेंज में. रेंजेस अगर आप देखोगे तो रेंज काफी बड़ी हो रही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, मे बी बिकॉज वी आर टू क्लोज टू द इवेंट, एंड ये कोई एक नॉर्मल डेटा पॉइंट नहीं है. रिमेंबर मैंने ये कहा भी था कि हम लोग
लोगों को सितंबर 18 को फेड की पॉलिसी है जहां पर फेड वुड बी मतलब थिंकिंग अबाउट नॉट जस्ट थिंकिंग, दे वुड डेफिनेटली कट द रेट्स फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। तो इसके लिए उसके पहले वाला जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उसके पहले वाला जो डेटा है वो आज ही है, तो इसके लिए आज का डेटा जो है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मे बी दैट्स द रीजन द वॉलेटिलिटी इज वेरी मतलब ज्यादा और उसकी वजह से काफी बड़े बड़े रेंजेस दिख रहे हैं हमें। नाउ लेट्स गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, सो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट आई सॉ टुडे कि यहाँ पर एक चैनल बन रहा था और वो जैसे ही उसने चैनल का यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया 130 के पास और उसके बाद यहाँ पर अच्छा क्लीन ट्रेंड दिया है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये ट्रेंड कैप्चर करना आई गेस इट वाज इजियर रिलेटिवली, क्योंकि बैंक निफ्टी वाज ऑल ओवर द प्लेस, तो ये थोड़ा सा तो बेटर लग रहा था मुझे। ओके, अब कल के लिए क्या, अब ये देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स तो डेफिनेटली बन चुकी है। यहाँ पर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था जहां पर उसने उसी दिन कल ही लिया था यहाँ पर से रेजिस्टेंस और यहाँ पर अब लोग हम आके रुके। अब यहाँ पर ये है कि दिस इज वन ऑफ अ गुड सपोर्ट 24,830 870 के पास, और ये अभी रेजिस्टेंस ये भी अगर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 2 बार टेस्ट हो चुके हैं। और अब कल अगर मान लीजिएगा हम यहाँ पर कहीं तो खुलते हैं 24,050 वगैरह, तो देन वी विल वेट, क्योंकि ये फिर गैप फिल करने आएगा और फिर जैसे ही रिवर्स करके सुबह का हाई निकालेगा तब दैट्स व्हेन वी कैन गो लॉन्ग। ओके, एटलीस्ट फॉर दिस टारगेट्स मिनिमम, और अगर उसके ऊपर ब्रेक होता है तो ये 25,200 इज द लेवल टू लुक फॉर, जहां पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हाँ, पर अब इसमें ये आई एम नॉट, लेट्स से इट्स नॉट लाइक 50-60 पॉइंट्स का गैप अप, कुछ बहुत बड़ा मेगा गैप अप होता है, मान लीजिएगा समवेयर अराउंड 90-100 या 150 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन होता है, तो देन सेम आउटलुक वी विल कीप। फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई लो वी विल बेसिकली ड्रॉ and whichever side the market will go, that's when we will trade. See, right now if you ask me, there is no clarity whether the market is on the bullish side or on the bearish side. Why? Because ये ऊपर गया और वहां पर से नीचे आया, फिर ऊपर अटेम्प्ट किया, फिर से नीचे आया, तो ये वापस यही जोन में है। तो जब तक ये जोन पूरा नहीं निकलता है तब तक ये, अब ये जोन भी अगर आप देखोगे तो काफी बड़ी जोन है। इवन इफ आई कंसिडर दिस 24,800, so this 24,800 to 25,200 is a bigger zone. So ऐसे मार्केट जब तक ये यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करती रहेगी तो इट विल बी डिफिकल्ट। सो अगर ये इसी के बीच में रहेगी, मान लीजिएगा अगर ये 25,000 के आसपास खुलती है वगैरह, फिर आप इसमें अगर आप लोग ऑप्शन सेलर्स हो तो फिर आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा कि ऑप्शन सेलिंग में आप ये वाले पुट्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, ये वाले कॉल्स या ये वाले कॉल्स, डिपेंड्स अपॉन हाउ कंजर्वेटिव और हाउ अग्रेसिव यू आर, उस हिसाब से आप वो प्ले आउट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर वही वापस 25,200 के आसपास कहाँ ना कहाँ रेजिस्टेंस दिख रही है और 24,800 एक अच्छी सपोर्ट दिख रही है अभी के लिए। बट कोई मेगा गैप अप वगैरह होता है तो फिर आपको वेट आउट करना बेटर होगा एज एन ऑप्शन बायर, कि आप फर्स्ट 2 कैंडल्स के लिए वेट करो एंड देन ट्राई टू प्ले आउट ऑन विचएवर साइड इट ब्रेक्स। बट रिमेंबर नॉट टू होल्ड इट आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर कोई नियर बाय रेजिस्टेंस है तो प्लीज बुक आउट। दिस इज स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन सेलर, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर वो ऊपर जाके नीचे भी आता है, टाइम पास करता है, सो देन यूजुअली फॉर स्ट्रैंगल सेलर्स इट इज बेनिफिशियल बिकॉज इट जस्ट टाइम पासेस। सो देन उससे क्या होता है, बेसिकली टीटा डीके हो जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। सो एज आई सेड कि कल के लिए हमारे लिए आज यूएस मार्केट्स कैसे बंद होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड उसके बाद वेयर वी आर गोइंग टू ओपन दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बायर्स प्लीज डोंट बी इन अ हेस्ट, जस्ट वेट फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स एंड देन टेक द ट्रेड। And for option sellers, if we are opening here, you can simply target these calls basis your risk appetite and these puts. This is what my understanding is for Nifty and Bank Nifty. और हम कल वाली वीडियो में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, because tomorrow I am expecting we'll get some sort of a clarity as compared to what we have today. क्योंकि कल because of the data and all. So then let's discuss more tomorrow. See you. Take care. Bye bye. And if you have liked this particular video, please don't forget to hit the like button and also do comment कि whether our videos are helping you or not. See you. Bye bye.